I'm 14 10, doing it up like my ex. It's been said and done. Every beautiful thought. Welcome, sir. Thank you so much for joining us. All right. Good evening, everyone. So, sir, it's been more than 10 years since the birth of Kazo. You've managed to stay on top of the food chain for so many years. Tell us something about your journey. Tell us something, what are the hardships you face, how you've multiplied so well in different cities in different parts of India. Well, to remain on the top is definitely not an easy job, but I think the whole thing behind it is the innovation. Innovation is the key. This is what I feel about it. And I would say the day Kazo started was also a very innovative date. Been thinking about this idea that there is a gap in the market and where the brands which are from Europe are for sure coming up and acquiring the market in India. Why not we? So that's the whole idea came to my mind that, okay, let's start up a brand which is going to be one of the brands in India, the Western wear category to be on the top. So the innovative date, when I say it like that, so it's a date when we started the first stores was 777.
777 was the first date where we we opened 2 stores of Kazo. And An the journey, auspicious beginning. yeah, that was the beginning, yeah. And the journey has been a little bit up and down, but of course, that's the way it has to be. And finally, today we are at 160 point of sales in the country, and we have covered pan India. And this is- Woohoo! Can you please have a huge round of applause? and also, we are online on Kazo.com, plus all the channel partners on online are also, we are everywhere there. And I would say, as I said, innovation is the key, and how we see innovation is 360-degree approach. And when I say 360 approach means the whole organization at Kazo is having an approach of 360-degree innovatively thinking. So when I say 360 again, means all the department across the whole culture of the organization is towards thinking innovatively, whether it's a product, whether it's R&D to make the fits better, and whether it's our HR policy, whether it's our locations where we need to open up a store, and I think that's the whole approach towards the things is very innovative, which of course keeps us ahead in the market, and that's the key. All right, so there are many young entrepreneurs in the there are many young entrepreneurs in the audience. What would be your one piece of advice for those of us who want to make it big in the fashion industry?
Firstly, you look lovely. Thank you. All right, then, Divya, tell us, how did you decide on fragrance to be your first project? So, well, the thought of launching fragrance was first generated by my father, Deepak Agarwal, and he had been envisioning to launch this line for a very long time. And whenever I would come back during the summer break, he would be like, oh, this is something we should do. And finally, after I completed my graduation, I came back, joined the business, and took on the role of the creative director. But I wanted to bring his vision to life, so I started working on this project about 6 months ago. And now we're here today launching the Kazo's fragrance collection with 5 different variants. That is amazing. So, Divya, how would you describe Kazo fragrance? So, well, Kazo fragrance, it's a complete collection from delicate to diva. We have tried, we have worked very hard, the entire team has worked super hard to create a collection that is a complete mix of every scent that a woman of today will require. We have tried to cater to different moods, to different ambitions and different audience. Like, we wanted to take into consideration the masses. We want to have a fragrance for each woman of the world, of India more specifically, to use. So the fragrance line ranges from soft fragrances to very strong and bold fragrances. Yeah. All right, then. And we know that you're a passionate designer. Yes. What is your idea of fashion? So, well, I've grown up in the fashion industry, so I've always been very passionate about design. When I think I was in third grade, I first said to my father that I want to be a fashion designer. And since then, a bunch of times my mind had changed, but then finally that's what I came down to. And my idea of design, I'd say that it's divided into two thoughts. Like, I really appreciate and admire creativity, and I have a great deal of appreciation for the non-commercial fashion. However, my innate belief in my design identity allows me to create. I think I'm more focused on utility fashion, where utility would be defined by commercial and wearable fashion. So, hence, I decided to work with Kazo and create wearable fashion for the masses. And finally, can we expect an exclusive line by Divya Agarwal in the near future? Well, that's something that I would definitely want to do in the future. And yes, you can expect something extremely great coming up in the next few years, possibly. Thank you so much, Divya. Thank you so much for talking to us. Ladies and gentlemen, can you please...
fragrance. Na 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 na. हो गया आपका फोटो? थोड़ा सा फॉरवर्ड आ जाइए, थोड़ा सा। हाँ जी। I'm doing alone solo, no, na? Not with. Solo? Okay. क्या नाम है? कोई नहीं है। चलो रोल है आपका? मैं ही हूँ. रोल है? ओके, सबसे पहले तो हैप्पी वैलेंटाइन डे। Happy Valentine's Day. ओके, एंड कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका रैंप वॉक का? एंड रैंप वॉक से पहले क्या कुछ नर्वसनेस होती है? नर्वसनेस होती है, लेकिन वो अच्छी बात होती है. आई थिंक बटरफ्लाइज और एनजाइटी, लेकिन मैं एक्साइटेड भी थी. तो हाँ, मज़ा आया. ये अगर आप हमें कुछ जी. आपके एक्सपीरियंस के बाद शेयर कर सके कि जो फ्रेग्रेंस के बारे में। तो 5 फ्रेग्रेंसेस है. सबसे फेवरेट मेरा होगा एडिट, जो वनीला फ्लेवर्ड है. तो आई थिंक इट्स अ ब्रांड दैट caters to all women and all different age groups. तो या एंड इस तरह के मोमेंट पे कैसा रहता है जी. ओवरऑल एक्सपीरियंस आत्या जी का, लाइक फैशन शो जी. के जो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था. आई थिंक सब कपड़े भी बहुत ही खूबसूरत है. आई थिंक सब लड़कियों के लिए है. आई डोंट थिंक एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए है. तो आई थिंक एवरीबडी विल बी कंफर्टेबल वेयरिंग द क्लोथ्स. और हाँ, यंग है. बहुत ही अच्छे कलर्स है, स्टाइल्स भी बहुत बेहतरीन है. तो हाँ, बहुत अच्छे कपड़े हैं. और परफ्यूम भी. परफ्यूम भी एंड ब्यूटीफुल अटायर भी है. तो थोड़ा आपके आउटफिट के बारे तो में मैंने बताना आई चाहेंगे। लव Black and ब्लैक. black. हाँ, आई लव ब्लैक. आई थिंक माई फेवरेट गो टू कलर इज़ ब्लैक या वाइट. तो आई थिंक मैंने ब्लैक चुना है. और मैं हील्स पहनती नहीं हूँ क्योंकि मैं लंबी हूँ, तो एडवांटेज है. तो मैंने आज डिसाइड किया कि चलो मैं फ्लैट्स पहनती हूँ. वैलेंटाइन डे के मौके पर कोई ऐसी स्पेसिफिक प्लानिंग होती है आत्या जी की तरफ से? नहीं, आई थिंक हर दिन प्यार का होता है. वो तो है. हाँ, तो आई थिंक वैलेंटाइंस डे एक स्पेशल दिन है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम प्यार दिखाते नहीं हैं हर रोज़. आई थिंक छोटे छोटे तरीके से दिखाते हैं प्यार. तो हाँ. ओके, एंड 2019 में क्या कुछ प्रोजेक्ट हमें देखने Yes. को मिलेगा? और हमने सुना है कि आपके भाई जी. की भी शूटिंग स्टार्ट हो जी. चुकी है. वो तो शुरू पहले- नहीं पहले हुई है. आपका जानना चाहते हैं. शुरू नहीं हुई है. अप्रैल या मई में शुरू होने वाला है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनके लिए. आई जस्ट फिनिश्ड अ फिल्म विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मोतीचूर चकनाचूर. तो बहुत ही मज़ेदार है. अलग है. मैं ये किरदार जो मैंने निभाया है वो अलग है हीरो और मुबारका नाम से. भी काफी अलग है. हाँ, मोतीचूर, मोतीचूर ऐसे लड्डू वाली चकनाचूर. feeling आती है. हाँ, लड्डू वाली ही है. और अगर आपके भाई की अगर मैं बात करूँ, जी. तो जब भी आप लोग ऐसे फ्री होते जी. हैं तो कुछ ऐसे एक्टिंग के टिप्स देते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं तो टिप्स देती नहीं हूँ. आई थिंक सबके अपनी अपनी जर्नीज़ होते हैं. मेरी भी अपनी जर्नी है. माई फादर ऑल्सो हैड हिज ओन जर्नी. तो आई थिंक वी लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, वी ग्रो फ्रॉम मिस्टेक्स. एंड या, तो आई थिंक एडवाइस और टिप्स तो नहीं, लेकिन आई थिंक विल ऑलवेज बी देयर फॉर ईच अदर. ओके, टाइम की प्रॉब्लम है तो अच्छा, बताते sorry. कुछ ये जो उसके बारे में जरा आप कुछ आपके बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. एंड आई थिंक आप लोग को सब खरीदना चाहिए काजो. और कपड़े, परफ्यूम्स. और हाँ, थैंक यू. फ्यू सेकंड्स थोड़ा सा आपको बुलाना है. हाँ हाँ, उनको आप बुलाना है. लीजिए. राधा कुछ कहता है. हाँ, वो उनका थोड़ा Got
Got it. Thank you guys. Yeah, Athiya, left, right. Thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you, thank you. Thank you.